Good evening and welcome to our special broadcast on the Delhi floods. We are joining you from the Yamuna Bazaar in the Old Delhi area, and behind me you see the Yamuna water that has come here. This is not Venice, ladies and gentlemen. This is what once used to be a residential area. There are still houses here that have been completely submerged because the Yamuna river is flowing at an all-time high level of 207.7 in fact, even beyond that figure now. So I'll show you how the local life has been impacted, and in fact people's lives have been submerged under the Yamuna river's water currently. This is a house that has been submerged to half of its level currently. Even behind me you'll see a house, and you'll see that it's submerged till its handle, till its door lock that we usually use. So that shows you that half of the ground floors are currently submerged and people can't live in these houses anymore. While we are sitting in a boat, this area used to be completely dry just about a week ago. For about a week ago, there used to be normal life here. This area used to be completely dry and you could walk here. But now it's impossible to do that because first, the water will come at least to my neck level, and even beyond that in this area beyond this point. And secondly, this water is not clean water, ladies and gentlemen. This is extremely unhygienic, unsanitary, dirty water. Even some people told us that there are snakes, insects and also mice all in this water. And of course you can see that there's garbage, trash, all kinds of dirt and germs in this water. So it's extremely unhygienic. But here's what we are seeing here. Some people have had to make makeshift houses. This one family is living on a boat because their house that you're seeing right next to their boat is completely submerged, is completely underwater. We'll try and speak to the people here who are living on the boat, and even you can see that there's a family, there's a child, there's a couple that's living on the boat here. And sir, अगर आपसे हम बात कर सकें, आप बताइए कि आपका घर कितना डूब गया, आप बोट पर किस लिए? आधे से ज्यादा सामान इसके अंदर है जो पानी के अंदर बेकार हो गया है। जो कुछ सामान बच पाया है वो सामने है आपके जी। तो क्या सब आपने सारा सामान निकाल लिया घर से? अभी आधे से ज्यादा अंदर ही है। अच्छा, तो सिर्फ जरूरी सामान अभी आपने बाहर 20% बाहर है, 80% अंदर है। तो सर अभी कहा जा रहा है कि लेवल और ज्यादा बढ़ेगा पानी का, तो तब आप क्या सोचेंगे? जो जितना निकल पाएगा निकाल लेंगे, जितना नहीं निकल पाएगा उसको छोड़ देंगे, क्या करेंगे? तो अगर पानी और बढ़ा तो आपका क्या प्लान है? क्या आप बोट में ही रहेंगे? बोट में ही रहेंगे जब तक पानी नीचे नहीं आता। पानी नीचे नहीं आता जी। और इस पानी में आपने देखा होगा कि गंदा भी है, जैसे कि हम देख रहे हैं इस पानी में हर तरह की गंदगी है, तो सांप और इन सब का भी खतरा रहता है। हाँ, वो तो चढ़ते रहते हैं हमारे ऊपर, सांप चढ़ते रहते हैं। So you can see that there are insects, there are snakes, all kinds of garbage here, and it's completely unsanitary to live here. Sir, क्या आपने इतना पानी यहाँ पहले कभी देखा है? कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? पहले 1978 में आया था, तब तो मैं बहुत छोटा था। उसके बाद मैंने 88 में देखा है, फिर 2010 में देखा है। उन दोनों के लेवल से ज्यादा पानी है। तो सरकार लोगों को इवैक्यूएट भी कर रही है, अलग अलग जगहों में रख रही है, तो आप लोग क्यों कहीं और जाके नहीं रहते? शेल्टर में जाके क्यों नहीं रहते? कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई पानी के लिए पूछने वाला नहीं, कोई खाने के लिए पूछने वाला नहीं। तो जरूरी चीजें आप कैसे ला रहे हैं? बाहर जाके आप खाना पानी कैसे ला रहे हैं? पानी में घुस के जा रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं। तो तैर कर जा रहे हैं? हाँ, तैर के जा रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं, क्या करेंगे? धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। वी हैव अनदर रेजिडेंट हियर। सर आप बताइए, क्या आपने भी पहली बार इतना ज़्यादा पानी यहाँ देखा है यमुना बाजार में? ये हाँ, बचपन से देख रहे हैं ये पानी। हम 78 में सबसे ज़्यादा आया था, उसके बाद में अब उससे भी ज़्यादा पानी आया हुआ है और आ रहा है, अभी बढ़ ही रहा है पानी, अभी बढ़ रहा है। हम आगे चल के आपको और दिखाते हैं कि कितने और घर यहाँ पर डूबे हुए हैं। विल शो यू फ्रॉम हियर how this area connects to the Yamuna river, and ये आप हमें सर समझाइए कि पहले पानी कहाँ तक खत्म होता था? यहाँ तक तो पहले पानी नहीं होता था, ये सूखी जगह होती थी। मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि कहाँ तक रहता था पानी। ये करीब 15 फुट अंदर है पानी इस टाइम, 15 फुट आगे होता था इधर बैक साइड में इसके, अब 15 फुट अंदर आ गया पानी। तो 15 फीट दूर से पानी शुरू होता था? हाँ जी। ये पूरी जगह कब तक सूखी थी? ये जी परसों नाइट तक जो ना आ गया था पानी, अंदर आना शुरू हो गया था।
परसों से ये जगह ऐसी हुई है. You can also see here that while ground floors have been completely submerged, inundated, so people are living on the terraces. We just showed you, and we're going to show you again, in fact, that people are living on the first floors. They've taken their belongings, while some people, of course, we showed you, are living on boats. Some people are living on the first floors here. There are children, there are small children and entire families that are living on the first floor now because it's absolutely impossible to live on the ground floor currently. So that's the situation. तो सर आप लोग भी क्या कैसे रह रहे हैं? क्या आप फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, ऊपर रह रहे हैं? फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं मैम. सारा सामान वहाँ ले? हाँ जी. खाने पीने की समस्या? मैम जो है ना जाके बाहर लाना पड़ रहा है ना. बच्चे जा रहे हैं, कभी नाव के जरिए जा रहे हैं, कभी है ना जीने पे कुछ बांध रखा है हमने, उसके जरिए जाते हैं बाहर, जो लेके आ रहे हैं सामान. जी. So you heard it from the residents here who are telling us that their normal life has practically submerged because of the Yamuna water level rising. And even behind me, you can see this is the ferocious Yamuna river that's flowing behind me, and that has caused all of this. It's important to point out here that this is not directly because of rainfall, but the Yamuna water level is rising because water is being constantly released in the Yamuna river from Haryana through the Hathani Kund barrage. And around 2.5 lakh cusecs of water is being released every hour, and 1 cusec equals a flow of around 28 liters. So you can do the math, 2.5 lakh liters, and you can imagine how much water that is being discharged into the Yamuna river every hour. So while this is the impact in the Yamuna Bazaar, we also earlier visited the monastery market and other areas which have been the worst hit because of the rising water level. Let's take a look at those reports. I'm not coming to you from the middle of a river. I'm coming to you from what once used to be a bustling market. This is the monastery market in Old Delhi, which has been completely inundated because of the overflowing Yamuna River. The Yamuna River is right next to this market, and it is overflowing at a dangerous level, at a flood, close to a flood level, at 207.2 meters above that level. And as you can see, this used to be a bustling market. People used to come here to get clothes, shoes, but currently most of the shops are shut. In fact, all of the shops are shut because, as you can see, the water is entering these shops, and the water level is only expected to rise in the coming few hours and over the coming couple of days. The last time Delhi saw such a high water level was in the year 2010, when these areas were completely flooded. You can see people are packing their bags. They are leaving this area. They're shutting their shops, completely taking all the things from here. As you can see, those people packing their bags, leaving from here and going because the water level is only going to rise. Sir, आप बात करेंगे हमसे, कितने साल से यहाँ रह रहे थे? यहाँ 6-7 साल हो गया. 6-7 साल से. तो कहाँ रहते हैं आप? हम पीछे रहते हैं. तो पानी कितने दिन में बढ़ा है इतना? कल परसों में कितना पानी? कल तो यहाँ तक था, आज ही रात को पानी हुआ है. तो अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब सामान पैक कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ यहाँ दिल्ली छोड़ के. दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं? कहाँ से हैं आप? So those two people, that one person at least, leaving Delhi, taking all his stuff, packing his bags, because he used to live here, but now this area has been completely inundated. It's underwater, as you can see, and it's only going to get worse from here on. Let's speak to some of the people who are shutting their shop, packing all their stuff and leaving. Sir, अगर आपसे बात कर सकते हैं, सर आपका नाम? दार्जिल है मेरा नाम. जी. सर आप कितने साल से ये दुकान चला रहे हैं? ये तकरीबन 30-35 साल हो गए दुकान चला गया. हाँ जी. तो अब आप पैक करके कहाँ जा रहे हैं, कब वापस आएंगे? नहीं, वापस जब तक पानी चलते रहेंगे तब तक हम दुकान पैक करके हम घर में बैठे रहेंगे. आपका घर किधर? ये पीछे है, मोनेस्ट्री के पीछे है. क्या उधर भी पानी है? उधर भी पानी है, पूरा गली सारा पानी भरा हुआ, इतना ही भरा है. तो पानी में ही आप लोग रह रहे हैं? हाँ, तो पानी ऊपर हमारा मकान पीछे, मकान में बैठे रहेंगे ना. तो सर आप 30 साल से करीब यहाँ पे दुकान चला रहे हैं, तो इतना पानी आपने आखिरी बार कब देखा? पहले 2013 ऐसा कुछ में देखा था हमने. उस समय एक बार आया था यहाँ. बहुत समय ये दीवार है मैम. We'll show you more ground reports in a while, but right now the Delhi Chief Minister is speaking on this flood situation. लो लाइंग एरियाज में आसपास हैं वो सब अपने अपने घर खाली कर दें, क्योंकि अचानक पानी आएगा, आपका जान को खतरा हो सकता है, आपके घर के सामान को खतरा हो सकता है. आप अपना घर खाली कर दें. हाथ जोड़ के सबसे विनती है, इंतजार ना करें. जो एरियाज ऑलरेडी अफेक्ट हो चुके हैं वो हैं बोट क्लब, मोनेस्ट्री मार्केट,
जहां पे पानी ऑलरेडी पहुंच चुका है। नीली छतरी टेम्पल नियर ओल्ड रेलवे ब्रिज, यमुना बाजार, गीता घाट, नीम करौली गौशाला, विश्वकर्मा एंड खड्डा कॉलोनी, गड़ी मांडू, मजनू का टीला से वजीराबाद तक का स्ट्रेच जो है। इसके अलावा ये एरियाज हैं यहाँ पे जो भी लो लाइंग एरियाज हैं वो उस्मानपुर, बदरपुर, खादर में जो भी लो लाइंग एरियाज हैं यमुना के पास वो खाली कर दें। डीएनडी पुश्ता मयूर विहार, जगतपुर में मेन पुश्ता रोड है जो यमुना तक जाती है उसको खाली कर दें। सराय काले खां पे भेलोपुर, शमशान घाट, जैन मंदिर, ग्यासपुर, मिलेनियम डिपो में के आसपास जो भी झुग्गियां हैं, और एक जो देखने में आ रहा है कि लोग बाढ़ देखने के लिए जा रहे हैं वो ना जाएं। उससे अचानक अगर पानी बढ़ गया तो काफी भीड़ लगी हुई है, लोगों को बाढ़ सेल्फी ले रहे हैं, वो वीडियो खींच रहे हैं, वो सब ना करें। आपकी जान को खतरा हो सकता है। अचानक अगर पानी बढ़ गया तो आपको खतरा हो सकता है। सरकार ने रिलीफ इवैक्यूएशन के बहुत पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और आप सरकार की मदद ले सकते हैं इवैक्यूएशन करने के लिए, या खुद अगर आप अपना दूसरे जगह जाना चाहें खुद जा सकते हैं। रिलीफ कैंप्स बहुत सारे लगाए हुए हैं और भी बढ़ाने की उम्मीद है। अभी अभी मेरी सारे डीएम्स के साथ मीटिंग हुई, उनको भी हमने कहा है कि आप ज़रूरत पड़े तो आसपास के स्कूलों को बंद कर दीजिए, उनको कन्वर्ट कर दीजिए रिलीफ कैंप्स में। टॉयलेट्स के लिए, नहाने के लिए अगर आसपास धर्मशालाएं, स्कूल एक्वायर करने की ज़रूरत पड़ती है उनको आप एक्वायर कर लीजिए। बहुत सारी एनजीओज हमारी मदद कर रही हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। इस वक्त बहुत गुरुद्वारे कई सारे हैं जिन्होंने लंगर लगाए हैं, गुरुद्वारे वालों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ये मौका है एक दूसरे की मदद करने का। हम सभी से अपील करते हैं कि ऐसे मौके पे आप सबको रिलीफ पहुंचाएं, एक दूसरे की मदद करें। अगर कोई प्रश्न अगर कितने बोट्स आपने लगाए हैं, कितनी बोट्स हैं दिल्ली में और कितने लोग आपने तैनात किए हैं, ये दो सवाल। नंबर ऑफ बोट्स 50 बोट्स हैं हमारे पास, 2 डिपार्टमेंट्स के पास हैं। बेसिकली कुछ डीएम्स के पास रहती हैं, कुछ फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास रहती हैं। तो इन बोट्स को जो पूरा स्ट्रेच। So while the Chief Minister is appealing to people, in fact, to leave their places, let's just get in one quick reaction from the residents. Chief Minister कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो निकल जाएं, कहीं और जाके रह लें, तो आप लोग क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? मैम, इतना सामान लेके हमारा सब कुछ तो बर्बाद हो गया। कहाँ से खाएंगे बच्चों को और खिलाएंगे? कहाँ से हम खाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे? तो रिलीफ कैंप्स उतने नहीं है जो आप लोग जा सकें? नहीं जी, कैंप लगे हैं 4, यहाँ पब्लिक है 1000, कहाँ जाएंगे? और फिर कैंप में रहने की है सुविधा, खाने पीने की तो कुछ नहीं है। So that's the situation on the ground against the promises and claims being made by the government. We'll take a short break now and be back with more ground reports on the other side. Stay tuned. Welcome back to our special coverage of flooding in several parts of the national capital. Several people are being evacuated. Thousands have been evacuated, but residents here tell us that government evacuation and rescue efforts are not reaching everybody who's stuck here. In fact, we have one lady with us who's been evacuated by her own neighbors in this boat that we are on the Yamuna River, as houses have been completely flooded. Houses have been completely submerged here, as you can see behind me as well. So let's just try and speak to her. मैम, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आप अपना नाम और उम्र बता दीजिए। मेरी उम्र 85 साल की है। नाम मेरा शकुंतला शर्मा है। मैं घाट नंबर 4 की मालकिन हूँ। तो अभी हमने देखा आपको आपके घर से बोट में लाया गया, और तो अब आप कहाँ जा रही हैं यहाँ से निकल? मैं मंदिर जा रही हूँ, 1-2 दिन वहीं रहूँगी। मंदिर इसलिए जा रही हूँ, नहीं तो मैं बच्चों के पास वैशाली भी जा सकती थी। यहाँ पास में इसलिए जा रही हूँ ताकि सामान बंद है, कल को कोई बात हो जाए तो कौन देखेगा। कम से कम किसी को संग में लाके तो मैं देख तो लूँगी ना। तो अभी आपका सामान अंदर ही है, सारा सामान नहीं लाए? नहीं, सब बंद है उसी में। जी। तो आप कितने साल से यहाँ रह रही हैं? मैं तो रह रही हूँ, सन 61 में मेरी शादी हुई थी, जब से यहीं रह रही हूँ।
जी, तो करीब 60 साल से आप यहीं रह रही हैं। तो आपने पहले भी इतना पानी देखा होगा? हाँ, इससे भी ज्यादा देखा है मैंने अपनी उम्र में पानी। ये हर साल तो बाढ़ थोड़ी बहुत आती है इस टाइम। और ये कौन सा सन था? 78 में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी जो जीने को पार कर गई थी। वो भी मैंने देखी है। मैं यहाँ बहुत दिन से हूँ, एकदम बहुत पुरानी रहने वाली। ऐसी बात नहीं है कि मैंने ये बाढ़ नहीं देखी, बहुत बाढ़ देखी है मैंने। तो हर साल उस बाढ़ में भी इस बाढ़ में भी आपने इतनी बाढ़ देखी है, कैसे उससे उभरते हैं आप? बस ऐसे ही उभर जाते हैं, क्या नाम है, इधर उधर टाइम पास करते हैं अपना, और क्या करेंगे बेटा। क्या पहले भी आप यहीं फंसे थे जब बाढ़ आई थी, आप पहले ही निकल चुके? हम 2 दिन पहले निकल गए थे। इस बार आपने तैयारी नहीं करी क्योंकि मेरे बस का नहीं था, कि मेरे शरीर में ताकत नहीं है इतनी कि मैं हर चीज़ को संभाल सकूं। मैंने सोचा बैठी रहूंगी, नहीं आएगा इतना पानी। जब सब लोग कहने लगे, ये भी मेरे बच्चे कहने लगे बाहर निकल जाओ, इस टाइम तो अच्छा ही रहेगा। मैंने सोचा निकल जाती हूँ। तो अब आप बाहर निकल गए हैं, ये हमें बताइए कि सबके ग्राउंड फ्लोर पूरा डूब चुके हैं, सब अपनी छतों पर रह रहे हैं। तो छत पे रहने में क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं? छत पे रहने वाले में तो छत वालों को वही पता होगी, वो बाजार से भी उनको भी सामान लाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। जैसे आप भी ऊपर रह रही थी, क्या सब परेशानियाँ आ रही थी? हाँ, परेशानी तो थी, नहाने की, धोने की, खाने की, पीने की, यही परेशानी थी। और लेटरिन बाथरूम भी जाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ ये सब सुविधा नहीं थी जी, इसीलिए मुझको वहाँ से आना पड़ा। अब मंदिर में ये सुविधाएं आपको? हाँ, मुझे मिलेगी वहाँ सुविधा। Another point that I want to raise here is कि यहाँ पर पानी गंदा बहुत है। हाँ। तो वो भी एक अहम चिंता है। चिंता है, वो पैरों को लगा लो पानी, पैर खराब हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है तुरंत। ये बात है। इनफैक्ट लेट्स शो यू सर, आप दिखाएंगे हमें कि पानी में क्या सब है, गंदगी है पूरा। This water is entirely brown, as you can see. This is not clean river water that's entering house. As you can see, it's completely brown. It's dirty water. It's filled with figs. It's filled with trash, and it's filled with dirt. And this is the water that's entering people's houses. So even after the water comes down, it's going to be a challenge for people to get all of this garbage outside their homes. And another challenge is snakes, which these people are spotting here. Snakes, insects that are in this water, and even residents were telling us that some people were bitten by snakes as well. So that's a primary concern of the people here while they battle with this flood water. But earlier, I also reported on some other affected locations in Old Delhi, and let's take a look at those reports. People packing their bags and shutting their shops in the monastery market area of Old Delhi as the Yamuna water has entered their houses, has entered their shops, and the level is only going to rise from here on according to what the prediction is. We are standing in the middle of the monastery market where you can see shops are being packed up. People are taking their belongings, shutting their shops. The monastery market in fact has been completely closed. There you can hear there's an announcement being made as well asking people to evacuate from here. As you can see, it's a very dingy lane here in monastery, and there's an announcement that's going on there asking people to leave. In fact, as you can see, the water is almost reaching my waist, and this water, while I'm just standing here, this water is entering people's houses. These are houses in which you can see water is entering, and it is only going to increase from here on. Let me show you some shops that have been affected. There's a shop selling jackets, selling other clothes here, and that is being completely packed up. Let's try to speak to some of the people here as they are wrapping up their belongings, leaving. Sir, आपका नाम बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम लोबसंग है। आप कितने साल से ये दुकान चला रहे हैं? मैं करीब 26 साल हो गया। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 52 साल। तो क्या पहले कभी आप अपना पूरा सामान पैक करके गए हैं या पहली बार है? पहले 2 बार गया था, अभी ये तीसरी बार। पहले कब गए थे? पहले कब गए थे ये पता नहीं, बहुत पहले साल 2 साल हुआ था तभी। 2013 में जब बाढ़ आई थी। कभी एक दफा ऐसा, तब बहुत, इसके बाद भी एक बार, अभी ये तीसरी बार जी। ये तो अभी क्या लग रहा है कि कब तक आप वापस आ पाएंगे? क्या सोच रहे हैं आप आगे के बारे में? अभी एक 2 हफ्ते नहीं आ पाएंगे। अभी पता नहीं है कि कब वापस? अभी नहीं आ पाएंगे, अभी बहुत पानी है ना जी। तो ये पानी कितने दिन में बढ़ा है? कल तक ये पानी कितना था? कल रात से बढ़ा है। कल रात को इतना पानी कितना था? पानी कल बहुत कम था,
आज सुबह अभी सुबह तक तो बहुत बढ़िया। तो कल तक दुकानें खुली थी? कल तक तो दुकान खुला था जी। आज तो पूरा ऐसा हो गया। तो काम का भी नुकसान हो रहा है, 1-2 हफ्ते अगर दुकान बंद रहेगी तो फिर पूरा दुकान ही बंद करा। तो काम का भी नुकसान काम नहीं होगा ना अब तभी तो। जी। कहाँ जा रहे हैं फिर आप अपना सामान लेके? सामान लेके ऊपर जा रहा हूँ। आपका घर इधर ही है? हाँ यही ऊपर है ना। फर्स्ट फ्लोर। अच्छा जी, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। लेट मी जस्ट शो यू इनसाइड दिस शॉप हाउ मच वाटर वी कैन सी। As you can see, this is a clothes shop and everything here is covered with water, and that's why the clothes are hanging up there. And in fact, they're packing up all of these clothes and taking them from here because the water level is going to rise. It's an extremely sad state of affairs that we are seeing here, with people wrapping up shops that they've had here for decades, and they are not sure right now when they could come back because the Yamuna water level is likely to only increase. तो सर क्या आप पूरी दुकान खाली करने वाले हैं? हाँ जी हाँ जी। सारे कपड़े यहाँ से ले जाएंगे? कपड़े ले जाएंगे ना, नहीं तो ये अभी पानी और ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर तो उठा नहीं पाएंगे। जी। तो पानी की वजह से अभी तक आपका नुकसान क्या हुआ है? ये यहाँ पे देखिए आपकी लकड़ी में पानी घुस रहा है। कपड़ा सारा भीग गया। It is slightly dangerous also to walk around here. There are mice. We just saw mice around us just a short while ago. So it is a very unhygienic place to be in, a very unsanitary place, and this is where people are living. Even what I've witnessed, ladies and gentlemen, there's garbage, there's trash inside this water. There are so many things hitting me below this water right now that I don't even know what all is around me. But that's just been the life of these people, and that's going to be the life of these people for the next few days to come. And there you can see there are more houses there as well, more people who are packing up their bags, their slippers, belongings, floating in the water. That shows you the extent of the devastation. There are several restaurants here, several beauty parlors, shops, so it was a complete bustling market just a couple of days ago. But now it has been completely inundated. The water is reaching my waist level by now, and it's only the water is only increasing as I step forward. आप भी यहीं पर रहते हैं? So you run the shop? No, it's not my shop. These are my neighbors. Oh, but you live here? Yeah, I live on 3rd floor. Okay. So while there's no water on the 3rd floor, but how are you getting essentials, going out to get ration? Hasn't it become very difficult to even get essentials from outside? As you can see, water is floating everywhere. It's been flooded. But essentials, yeah, it's going to be very difficult for us. And previously it was not announced that the water level will shoot up to this mark. Yesterday it was not so, and we were not properly given instructions, proper announcement that water level will shoot up to this much, and nobody was prepared. Though it was not the first time that we had the flooding. We had previously in 2013 or 12, 13, and then previously we had that. Yeah, but we need some time. Everybody earns here. All the ground floors are shops, and it costs money, you know. Once everything is clothes, and if they get, you know, dirty with the water, then nobody will buy these things, and shopkeepers are going to be really affected by this. So, yeah. So do you also run a shop around here? No, I used to have, but not anymore. Okay, so does your family have a shop? How do you make your living around here? Yeah, but I work outside, so I took a work from home, but since my community is having a problem here, so I just came down to help them. As people are being evacuated, animals are also in trouble because of the rising water levels of the Yamuna river. We're coming to you from a gaushala or a cow shelter in Old Delhi, and this is where these cows used to stay. This was the entire gaushala, but now they're being taken from here to outside on the road where they'll be kept for the next coming few days because this water level is only going to rise. So there you can see these cows being taken out because the water level is rising. Let me show you where this water is coming from. It's coming from right here, which is the Yamuna river.
and the Yamuna river has been flowing at a dangerous level, at a flood level for the last couple of days. In fact, now it has crossed the 2013 record, and now it's at the highest level since 1978, the highest level in 45 years. So that's the Yamuna river. There you can see half of the trees are completely submerged, and that's the same water that is entering this Gaushala through those channels, as you can see. And the speed at which the water is entering, that makes it seem like the water is going to go up so high that half of these cows, up to half of their height, they could be submerged in water, and that's why they're all being taken out by their owners in this Gaushala, because already you can see that their feet are submerged in this water and they are crying for help, as you can hear. So an extremely concerning and a sad situation that we are seeing here in Old Delhi because of the rising Yamuna water levels. It's flowing above 207.3 meters, highest level that Delhi has seen since 1978, when there were floods in the city, especially in this part. This shows you how the livelihoods have been completely impacted in this area, how humans have been impacted, of course, which we've been showing you through the day, and how animals are being impacted. In fact, let me just ask my camera person to show you these visuals of how high the water is, that it's coming to close to the knees of the cows who are currently here. We came here just around 10 minutes ago. Until then, there was water only till this black cow that you're seeing. But now there's water till that point. As you can see, there's water till that point, even though just 10 minutes ago there was water only till this point, but now it's only progressing. And as we speak, these cows are the water will reach half their height in just a few hours, if not minutes from now. And that's why they're all, as you can hear, crying for help. And they are being taken out, and they're all going to be tied outside on the road, according to what the owners are telling us. We'll also try and speak to some of the owners. But let me also tell you that Delhi has not seen such a situation in the last 45 years. And nobody was prepared for this, because remember, the water level was not expected to go up so high. It was expected to go to around 206, but now it has crossed 207, and that's not what the expectation was. But it's going to get even worse, because the prediction is that the water level will rise even further, and that's a major concern for all the people living around here. Ma'am, सॉरी, आप बहुत बिजी हैं, पर अगर 2 मिनट आपसे बात कर सकें, आपका नाम बता दीजिए और आप कब से ये गौशाला चला रहे हैं? मेरा नाम सीमा पराशर है। मैं तो खैर 30 साल से मेरी शादी हुई है, लेकिन मेरे फादर इन लॉ मतलब 60-65 साल पुरानी गौशाला चला रहे हैं। ये 2013 में मैंने यही स्थिति देखी थी, इससे ज़्यादा ही थी, लेकिन बापूजी बता रहे कि इससे पहले बहुत बुरी स्थिति थी, लेकिन 1978। हाँ जी, लेकिन अब आपके सामने ये जो कुछ भी है, पर अभी स्थिति बिगड़ ही रही है, तो उस लेवल तक पहुंच सकती है, जैसे आप देख रहे हो ये ऊपर तक पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी। तो 2013 और 1978 में पानी कहाँ तक पहुंचा? मतलब कृष्ण भगवान जी के पैर से ऊपर घुटने पूरे दब चुके थे पानी के अंदर। हाँ, इनके पूरे जो घुटने हैं ये बिल्कुल पानी के अंदर थे। That's very important to note, because in 1978, ma'am is telling us that half of that idol that you're seeing of Lord Krishna was submerged underwater. And back then the water level was very similar to what the Yamuna water level is today. So that's the fear, that the water is likely to reach that level. तो मैम, आप कैसे तैयारी कर रही हैं? कहाँ ये गायों को रखा जाएगा? So the cows are being taken outside, and let's just take a look at how high the water is going now and how it's going to get even worse. तो मैम, क्या तैयारी है, क्या प्लान है? आपके सामने ही है, जो कुछ भी है, जितना हमसे बन पा रहा है उतना हम कर ही रहे हैं। तो कहाँ रखेंगे आप अभी इनको? ये बड़े तो यहीं रहेंगे बेचारे, कुछ यहाँ ले आएंगे, कुछ छोटे बच्चे हम लोग बाहर ले गए हैं। तो कुछ पानी में ही रहेंगे? कुछ पानी में रहेंगे, कुछ अपनी देखो खेल के ऊपर चढ़ जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे, अंदर भी खेले हैं, अंदर भी चढ़ जाएंगे। ये जो बड़े पानी आ रहा है, हाँ जी, जहाँ से पानी आ रहा है, ये अपना बड़ी तो उसके ऊपर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको हमने आपके सामने बाहर निकाल ही ली है। जी, तो मैम आप कह रही हैं आपने पहले भी ऐसी सिचुएशन देखी थी, तो साल दर साल ऐसा होता रहता है, पर
कुछ सुधार नहीं हो रहा है? सुधार क्या हो रहा है, यही हमने अभी भी बात करी थी कि भाई इसका भरान करा जाए, लेकिन अब हम इसी चक्कर में से ये तो सोचा भी नहीं था इस बार की बाढ़ आ सकती है। 2013 के बाद तो ऐसा कोई नहीं आया, लेकिन लगा था तैयारी की जाएगी, तैयारी की जाएगी, लेकिन वो आया नहीं। हर बार बरसात होती थी 2013 के बाद, लेकिन कोई दिक्कत आई नहीं थी, लेकिन अब आई है। तो अब वही है कि फरवरी में इसका गौशाला का भरान का काम करेंगे, इसको ऊपर मतलब जमुना से थोड़ा ऊपर उठाएंगे, जब भी मतलब इसमें अंधी गायें भी हैं, लंगड़ी भी हैं, जो कि अंधी हमारी लंगड़ी अंदर बंधी हुई हैं गायें। ये सब रेस्क्यू की हुई गायें हैं जो सड़कों से लाई गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब हम लोग इसकी सेवा करते हैं और ये सभी के चंदे और सहयोग से ये गौशाला चल रही है 60 साल 65 साल से। सबसे बड़ी गौशाला, पुरानी गौशाला यही है पुरानी दिल्ली में। जी धन्यवाद मैम। इस गौशाला पे दूध नहीं निकलता है। अच्छा। इसमें सिर्फ निस्वार्थ सेवा है, कोई ये नहीं कि ट्रस्टी है। सभी आप लोग जो थोड़ा थोड़ा दोगे उसी के सहयोग से ये गौशाला चलती है। इस पे कोई दूध वगैरह सप्लाई नहीं होता है, कुछ नहीं है, डेयरी नहीं है, कुछ नहीं है। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। मुश्किल समय है। तो एज यू हर्ड that she's telling us that year after year the situation of the Yamuna river, they've seen the situation back in 2013, back in 1978, but there doesn't seem to be an improvement in the preparedness that the government makes. And as we are speaking, you've seen that the water level wasn't so high when we started recording this segment, but now the water level is going up, and these cows are also making noises, crying for help, as we've pointed out that the water level is only going to go higher up. The fear is that it could go that high that half of the Lord Krishna idol that you're seeing might be submerged. That's the fear right now, as the Yamuna water level is only rising, with more and more water being discharged from Haryana through the Hathini Kund barrage.